Welcome to all of you today. We have Sanket with us today talking about the VIT on the popular demand of having any of the students from VIT who can explain us the detailed procedure. We'll try to do this video both in Hindi and English, and Sanket will help us going through this journey. So, welcome to the session, Sanket. Thank you, sir, Hi. and hello, everyone. Okay. So, Sanket, you are in which? You are in VIT as of now, correct? Yes, I am in VIT. Currently, I am in my room in B block men's hostel. Okay. Yeah. So, Sanket, a little bit about yourself. Which year you are in? What specialization you are carrying as of now? I am third year mechanical engineering student. I am in mechanical core branch, and I am also into drones and YouTube. Okay, so that's your area of interest, right? Okay. So, Sanket, आप हैं कहाँ से आप इंडिया में? You are studying there in Uh, VIT? I am from Pune, Maharashtra. Acha. Okay. Yeah. Okay. And how did it just come to your mind, Sanket, that you should be going to VIT, and why did you choose VIT? So I was exploring about all the options while I was choosing the best college which will fit according to my demands. So I want to pursue a master's degree from abroad, and Okay. according to the conditions, VIT was best fitted college for me because there are a lot of chances of growing in VIT, the exposure you get in VIT, and the you get an edge above other college students when it comes to masters, as the reputation of VIT abroad is really good, and you must be aware about the NRF rankings and stuff, and Yeah. the overall reputation or the perspective other students or other colleges think about VIT is really good when it comes to abroad colleges or doing masters in abroad. Okay. So, Sanket, जैसा आपने बताया about the NRF ranking, so those who do not know, for them I just would like to tell कि इस बार का जो NRF ranking है VIT का, that is around ninth, if I'm not wrong. Yes, sir. That's around ninth rank for all the engineering institutions in India. VIT is currently ranking ninth in India, right? Yeah. ओके तो संकेत थोड़ा बहुत ये बताइए कि जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि लेट्स स्टार्ट विद द एडमिशन प्रोसीजर ओके इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू कम फॉर गो फॉर वीआईटी तो उन्हें एग्जामिनेशन कौन सा देना होगा उस कौन सा देना होगा उसके बाद उसका मार्क्स क्या होना चाहिए वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए और कितने बच्चे टिपिकली ये अप्लाई करते हैं सो टिपिकली आपको एक एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी कॉलेज के लिए देना पड़ेगा। तो वैसे वीआईटी के लिए भी एक डेडिकेटेड एग्जाम है जिसका नाम है वीआईटी ट्रिपल ई, वेल्लोर राइट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये एक इंजीनियर जेई मेंस का जो एग्जाम है उसी के लेवल का एक एग्जामिनेशन है। उसको लिए अप्लाई करना है आपको फरवरी मार्च के अराउंड, उसके एप्लीकेशन खुल जाएंगे, अप्रैल एंड तक चालू रहेंगे। फिर आपको इस एग्जामिनेशन में qualifying marks लाने हैं, and then you are eligible for applying for admission in VIT. So last year के statistics के around 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, और उनमें से अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं VIT के चारों कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए, ओके एंड then according to the merit you get the seats in VIT. अच्छा सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो संकेत ये जो आपने बताया कि हमें वी आई ट्रिपल ई देना है ऑब्वियसली ये कॉलेज स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है तो जेई मेन के जो मार्क्स हैं बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट है वो जेई मेन भी लिख रहे हैं राइट तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उनको जेई मेन के अलावा भी वी आई ट्रिपल ई देना कंपलसरी है और इन प्लेस ऑफ वी आई ट्रिपल ई जेई मेन मार्क्स जो है वो भी एप्लीकेबल है वीआईटी में एडमिशन के लिए एज ऑफ नाउ VI ट्रिपल ई एक सिंगल स्ट्रीम इनपुट है VIT के लिए। जब कोविड था तब VI ट्रिपल ई नहीं हो पा रहा था, तब जेई के मार्क्स कंसिडर किए थे, लेकिन आपको अगर VIT में आना है तो आपको VI ट्रिपल ई एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है।
ओके, तो ये क्लियर हो गया ऑडियंस के लिए कि हाँ, नाउ अगर आपको आना है, अगर आपका जेईई में कुछ भी आपका मेन का परसेंटेज आया है, मार्क्स आया है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। अगर या हमें वीआईटी में एडमिशन चाहिए तो दे शुड ऑलवेज कंसिडर राइटिंग वीआई ट्रिपल ई इन एडवांस, और अगर आपने प्लान नहीं किया होगा तो यू विल मिस द बस। या या ओके, राइट। तो अब अगर हम बात करें संकेत वीआई ट्रिपल ई का, तो इसमें अगर हमें एडमिशन अगर लेना है फॉर एग्जांपल, तो आपने बोला 2 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, 1.5 लाख बच्चे ऑलमोस्ट एलिजिबल होते हैं, तो हाँ। इनमें कट ऑफ का प्रोसीजर किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? सो बेसिकली ये जो 1.5 लाख बच्चे मैं बोल रहा हूँ एलिजिबल है, तो उनमें से जो फर्स्ट 1 लाख स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और आंध्र प्रदेश कैंपसेस के लिए। और ओके। जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच के जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ एलिजिबल है भोपाल और आंध्र प्रदेश के कैंपस के लिए। तो ओके। ये है आप अगर इन रैंक्स के बीच में फॉल करते हो तो आप एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबल हो। तो आपको आपके रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है और उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। जो कट ऑफ्स होंगे वो हर साल डिफर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सीएसई का जो ब्रांच है वो राइट। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत लोग हाई डिमांड पे उसको होता है। डिमांड करते हैं। तो ऑब्वियसली उसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई होता है। इट कैन गो एज़ हाई एज़ 2 टू 3 के कि मतलब 2-3 के रैंक टॉप तक केसेस सारे होते के हैं। सारे सीट्स फुल हो जाते हैं सीएसई कोर ब्रांच के। राइट। और जैसे ही हम जाते हैं अदर ब्रांचेस की तरफ जैसे सिविल हुआ, बायोटेक हुआ, तो उसके कट ऑफ 80-90,000 तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और ईयर कि हर स्टूडेंट कैसे काउंसलिंग में अपीयर करता है। ओके। ओके। तो ये हम कलेक्टिवली वीआईटीज की बात कर रहे हैं, राइट? हम हाँ। स्पेसिफिकली वीआईटी वेलोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्टिव की बात। कलेक्ट अभी जो मैंने बोला वो वीआईटी वेल्लोर को स्पेसिफिक थोड़ा-सा है, लेकिन उसी के ट्रेंड के हिसाब से बाकी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीआईटी वेल्लोर का कट ऑफ 3000 जा रहा है कोर के लिए, तो एज़ सून एज़ वीआईटी वेल्लोर का सीएसई कोर खत्म हो जाता है, उसी के 1-2 हज़ार रैंक के बीच में वीआईटी चेन्नई है उसका फिल हो जाता है। वीआईटी भोपाल और आंध्र प्रदेश को लोग इतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं क्योंकि रिलेटिवली न्यू कैंपसेस है। तो उनका थोड़ा-सा जो कट ऑफ है, वो थोड़ा पीछे रह सकता है। 20-30 के तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आप एक 90s 80s में आपका रैंक है, फिर भी राइट। आप एक डिसेंट ब्रांच में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो एपी और भोपाल में। ओके। लेकिन अगर आपको चेन्नई या वेल्लोर में चाहिए तो आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए जो कि 30-40 के चाहिए आपको। अगर आपको अपर ब्रांचेस चाहिए जैसे कि ईसी हुआ या सीएसई की कुछ स्पेशलाइजेशंस हुई। ओके, अंडरस्टूड। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि उन्हें वीआईटी में एडमिशन चाहिए, और अगर अच्छी स्पेशलाइजेशन में चाहिए, तो आप लोगों का टारगेट मिनिमम होना चाहिए 30,000 और लेस या रैंक, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। और अगर उसमें भी प्रेफरेंस है हमारी कंप्यूटर साइंस, तो इसका मतलब है टॉप 5,000 स्टूडेंट्स में आपको होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर ये नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक। यस। करेक्ट? हाँ। राइट। तो ये तो थोड़ी सी फॉर्मल डिस्कशन हुआ। संकेत, सिंस वी आर टॉकिंग टू यू, लेट्स जस्ट हियर आउट फ्रॉम यू, आपका क्या स्टोरी है? लाइक हाउ डिड यू लैंड अप इन वीआईटी? सो मुझे करना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ओके। आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स. So what I want to do is I want to pursue a master's degree in aerospace and most probably I will be pursuing it from abroad. ओके। So मुझे एक strong base चाहिए था कि if I go from a premier institute and if the institute name is like या well known in the abroad or in या the engineering योर world, एक्सेस टू। and I will get a better opportunity of getting a good college and a good professor abroad. So this was my story. This is why I chose VIT, या and now I am pursuing mechanical core. I am pursuing core because I wanted to not limit myself in my initial years. So what I am doing in from last 3 years, I am exploring all the outcomes what are possible. If I go with a specialization, then I will be confined to the same specialization. So I have kept all the options open. I am studying core, and या afterwards in the masters I will be narrowing it down
to a particular specialization which I am interested in. Yeah. So you must be thinking about getting some scholarship from good universities and writing again entrance examination for that. Yeah, sure. Okay, so that's sounds like a good plan that you already have. Okay, so coming back to the college institute, संकेत यहाँ पर अगर हमें 4 साल के लिए बिकॉज बहुत सारे ना एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं हाँ, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में या, उन लोगों का एक नेचुरल प्रेफरेंस रहता है वीआईटी में आने के लिए हाँ, दे हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन बिकॉज द कॉलेज इज वेरी गुड rank is obviously very good plus it's in their proximity so whenever anybody the first question is whenever any NRA or let's say any person from UAE or if he's from South India if you would like to come down to VIT is there any specific quota for the NRI students? Yes, there is a specific quota for NRI students. They Okay. can, if they are NRIs, they can either apply for VIEEE and then they can get into VIT. As you said, most of the students are from Middle East. Yeah. VIT has some centers abroad in Dubai and UAE, so you Yes. can go over there. You can give your admissions, and then you can get entry to this NRI quota. Or if you don't want to get entry through NRI quota, then you can also get entry using normal VIEEE if you are an NRI, and if you are a foreign student, then you have to get through there is a Sir. specific different procedure for foreign students which don't Yes. who don't have any relation with India, Yes. they don't have Indian passports and stuff. So what they can do is there is a specific website on VIT's page. There is admission slash international, and then they can go over there and apply, and the further procedures will be communicated with them. Okay. Is there any specific seat dedicated to for the NRI students? So the data is not clear from any statistical data given Yeah. on the website or so, but there is a specific quota because there are a lot of people coming in every year, and there Yes. are different kinds of MOUs signed with between different universities. So there is a large intake of students from international and NRI quota, but the number of specific seats is not given anywhere. या बिकॉज क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70 इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के जो कि डासा ने रिकॉग्नाइज किए हैं और इन कॉलेजेस में एनआरआई दे हैव देयर स्पेसिफिक सीट रिजर्व्ड स्पेसिफिकली Yeah, फॉर द एनआरआई स्टूडेंट्स राइट अंडर द डासा एंड द सीडब्ल्यूजी. But since VIT do not fall into it, I thought that maybe I should just might ask you if you yeah. have the deep knowledge over the admissions. Okay, so that's one part. How many संकेत total अगर मैं पूछूं तो आपका बैच साइज क्या है अभी VIT में? एक क्लास का साइज 60 स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स मतलब लाइक से सीएससी में ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होंगे उनका फ्लो ज्यादा है, मैकेनिकल में कम है, तो उसकी डिपेंडिंग All ऑन together दैट. sum up. हाँ, All together sum up. अगर हम sum up sum up as of now in the 2022 batch they have welcomed 9,000 freshers. 9,000. So, I'm not sure if they are only from BTech, but I think they are all from all the undergraduate courses altogether. Yeah, I think that should be a collective figure. Yeah, collective figure. और इनमें से इफ यू हैव टू कोट एन परसेंटेज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एनआरआई होते हैं क्योंकि एनआरआई का भी इंक्लिनेशन मैंने देखा है इन द रीसेंट पास्ट दे आर नाउ प्लानिंग टू मूव टू इंडिया. पहले काफी Yeah, लोगों का होता था कि नहीं हमें बाहर ही जाना है बट नाउ फॉर एट अ यूजी लेवल वी आर सीइंग अ शार्प इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन amongst the NRIs to come to India and then maybe for PG because अगर आप UG level पे बाहर जाते हैं तो I think it's going to be very expensive. At a yeah, it's PG going to be. level, I think थोड़ा manageable हो जाता है because then you have other options available and you can get scholarships. Yeah. Yeah. So what according to my observation is in a class of 60, you Yeah. can definitely find 2 to 3 NRI students. Okay.
डू यू कहीं से भी आपको लगता है कि ये उनके लिए डिफिकल्ट होता है टू एडजस्ट बैक टू द कॉलेज? जो कॉलेज लाइफ एक इंडियन माइंडसेट की जो प्रिपरेशन होती है, Yeah, आपने पुणे में देखा होगा, वो एकदम डिफरेंट है। और yeah, एनआरआईज का जो स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है और जो प्रिपरेशन लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज वी हैव बीन डीलिंग yeah. विद द एनआरआईज फॉर द लास्ट 10 years। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ना एक कल्चरल शिफ्ट भी है उनके लिए और एक चैलेंज Yeah. भी है। सो डू दे स्ट्रगल विद दिस थिंग? So there is no there is no thing of struggling in VIT because VIT is famous for cultural diversity. So ओके। you get a huge variety of cultures, huge variety of people. You get people from different states, different countries, all along under same roof. So I don't think cultural diversity plays an important role in VIT because there are students coming in from different branches, different states, different schools. So there is no need of struggling. They may struggle with some communication part, but as of now in VIT everyone talks in English, so there is no issue of struggling here. So I think more or less they'll feel comfortable, they won't Yeah, feel they will any, feel comfortable. they won't feel anything। Okay। तो वीआईटी में अब संकेत अगर कोई आता है, राइट, किसी ने भी अगर एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेने के बाद इज ए बिकॉज काफी टाइम हमने देखा कि बिट्स वगैरह में आपको उनके कैंपस में ही रहना होता है, तो वीआईटी में इज देयर अ कंपल्सन दैट यू हैव टू बी देयर इन द कैंपस और यू कैन हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग योर ओन अकोमोडेशन आउटसाइड द कॉलेज? Yes. So there are two terms, hosteler and day scholar. So ओके। everyone who comes to VIT is a hosteler. Uh, in this, everyone will get a room in hostels and they will have to stay over there. But if your parents are staying in a radius of 60 kilometers from VIT, ओके। uh, this is a really important term. Your parents, not your relatives, your first blood मदर relative, फादर। ओके। yeah, mother father is living in 60 kilometers of VIT, then you can apply for day scholar and then you can live outside VIT. Okay. So only in that case they are eligible Yeah, to reside outside, else they have to be there. yeah. Ah, okay. So that's an interesting point which we never knew। Okay. So Sanket, अगर let's come to the fee part, because ये एक बड़ा ना substantial factor है Yeah. and everybody is concerned about the fee because college अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, सब चीजें, but ultimately the deciding factor is this: how much do we need to shell out at the end of the day? So VIT Yeah. में for a 4 year you are doing a mechanical, how much you are spending roughly on it? So roughly a fee can be around 2 lakh per annum, 2 lakh per annum. 2 So lakh per annum, and the hostel fees can go from 1 lakh to 1.25 lakh depending on the room you choose and the mess you choose. okay, so we can say 3 lakh rupees per annum. We can say Yeah, 3 to 3.5। 3.5 lakh on an average. So you mean to say कि अगर मुझे वीआईटी में एडमिशन लेना है और 4 साल की अगर पढ़ाई करनी है, तो मैं 15 लाख रुपए में ये पूरी पढ़ाई कर सकता हूँ। Yeah. Uh, बट यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा संकेत, की इंडियन स्टूडेंट्स की तो ठीक है, बट डू यू थिंक कि इट्स द सेम फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स? no, the fee structure for NLI students is different from Indian students. The fee structure for NRI students is in USD because there are people coming from all over the world. So the fee structure is in USD. And according to me, what I have read, it's around 9,000 USD per annum. It's per annum or not per semester? Because generally It's per engineering annum. colleges charges per semester. It's per annum. Yeah, in VIT, it's per annum, not per semester. Okay, so 4,500 per semester. Yeah, 4,500 per semester. Okay, okay, understood. Okay, so I think again this is a decision point that they have to Yeah, consider before venturing into it। ओके, सो दिस इज वन। सो नाउ संकेत, एक चीज जो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ऑफ कोर्स हम जेई मेन से वीआईटी ट्रिपल ई को कंपेयर नहीं करेंगे, yeah, बिकॉज वो एक नेशनल लेवल है, वीआईटी ट्रिपल ई एक स्टेट स्पेसिफिक या एक कॉलेज स्पेसिफिक yeah, एग्जामिनेशन। बट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब जेई तो देते भी 14 लाख लोग हैं और वीआईटी ट्रिपल ई आप बता रहे 2 लाख लोग दे रहे हैं, तो हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज to get under 30 or 25,000 rank, which you have mentioned earlier? How competitive it is? so what I think is if you have a
basic preparation of JEE mains. If you can score well in JEE mains, then you can definitely score really well in VIT Triple E. Getting a rank around 30-40K won't be a great Okay. struggle. Okay. And if you are an excellent student, if you are getting for example 95, 99 percentile in JEE, then you can definitely aim for ranks around 1 to 2K. Okay. So that's decent. So this means मतलब हम ये बोलना यहाँ पे चाहते हैं, if I have to reiterate what you just said, कि if I am preparing well for my JEE main, this automatically will help me in getting a better rank in my VIT. This is Yeah, as yeah. for. Because more or less the JEE main syllabus and VIT Triple E syllabus are same. They are both based on NCRT 11th and 12th standard books. Yeah. Yeah, करेक्ट सो यहाँ पे संकेत एक चीज है हम लोग एक रीसेंट डिस्कशन कर रहे थे अराउंड बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स के साथ तो वही क्वेश्चन मुझे अभी भी ध्यान आया कि जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल क्लास 11th एंड 12th सिलेबस की आपने बात की सो yeah. दिस ओनली रिमाइंड मी कि खाली जेई की खाली 11th एंड 12th की प्रिपरेशन डू यू थिंक इज सफिशिएंट इनफ टू क्रैक वीआई ट्रिपल? So it may be or may not be sufficient depending on how you study it. But what I would recommend is going hand in hand, doing 11th and 12th preparation and doing JEE mains preparation, because the thinking skills what you use while writing your NCRT paper or your board examination, Yeah. and the thinking or the higher level thinking you use while solving the MCQs in JEE, Yeah, that that is particle different. thing and that Yeah. interpretation. So for that, you need to train your mind in order to think at that amount of speed and with that precision and accuracy. So I would recommend doing both hand in hand. Okay. I think Sanket यहाँ ना I think I would need your help. होता क्या है? I would like your message for particularly for the NRI student because Indian students we are here in India we know what the education culture is and we understand what the priority is. But Yeah. when it comes to the NRI student, there is a constant dilemma, and probably you can help them out through this video message. They spend most of their time preparing for the CBSE their classes like 10th, Yeah. 11th, and 12th. They are massively burdened by the Yeah. tuition classes and tuition classes, and that too specifically for the CBSE only. Yeah. 10th, 11th, and 12th, they spend a considerable amount of their evening time going from one class to another. And again, they are not spending much over their JEE main preparation. As you said earlier, that a good amount of preparation on JEE main can then land up to then help them getting admission into any of the good colleges there. Yeah. What's your message to them? What do you recommend them to do? So what I would recommend them is giving equal importance to CBSE as well as JEE men's preparation, because like you cannot succeed with focusing on any one of them, because you will be needing both of them while getting a better engineering college in India or abroad. So what I would recommend is focusing equally on both the aspects. I won't suggest neglecting any one of them, Right, so you can get your goals clear what you want to do in your future, and then accordingly you can make a 1 year 2 year plan for your 10th 12th, and then you can focus. And I will recommend focusing equally on boards and JEE mains examination, because they will be helpful in each other, because right, the syllabus are pretty much simple. Just the thing is, one is objective one and one is subjective. So correct. preparing for both will be beneficial in long run. ओके सो संकेत इस चीज में इफ आई हैव टू आस्क यू कि अगर हमें अपनी प्रिपरेशन लेट्स से स्टार्ट करनी है आप ऑलरेडी एक अभी स्टूडेंट हैं यू रिसेंटली वेंचर्ड इनटू इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस अगर आपको दोबारा चांस आपने अच्छा पहले मुझे ये बताइए आपने अपने इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कौन से क्लास में स्टार्ट किया था संकेत? मैंने अपना प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट किया था. आई वाजंट अवेयर अबाउट ऑल दिस कंपटीशन गोइंग ऑन, सो राइट आई वाज प्रीटी मच लेट, आई वुड से. तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है इफ यू वर गिवन अ चांस अगर आज आपको चांस मिले दोबारा गोइंग बैक इन टाइम
आप अपनी प्रिपरेशन कौन से क्लास में स्टार्ट करना चाहेंगे कि आपको Uh, लगे कि आई विल बी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट इवन टू बेटर कॉलेजेस? I wouldn't say that I would start my preparation from 7th, 8th standard, but what I would like to say is what are the basics from 8th, 9th, 10th. If I would go back, I would like to clear all my basics in 8th, 9th, 10th as much as I can. Okay, and then from which class you will actually be start preparing for the examination? I think 11th and 12th is pretty much sufficient if you go in a like in a set approach and if you plan everything out. So I can see that something like planning is missing in most of the aspirants. Even in Okay. my case, planning was missing. If I would have planned it well, Yeah. it would turn out really well now. So my suggestion to all the students or to the parents who are watching this video right now is, see, ultimately you will be able to do each and everything. What you cannot do is you cannot buy or you cannot have a spare time later when it's actually needed, right? So if anybody who is preparing or who is planning to prepare, watching this video, trying to get some idea, I think, and probably Sanket can clear this later, that according to me, 10th is an ideal class where you should start thinking about it, not preparing about it. Start your planning. Planning part is important because ultimately 12th you're going to have your boards, right? You'll be spending good amount of time in preparing your board in 10th and in 12th. 11th you are already confused because there's a good amount of difference in syllabus from when you move from class 10th to 11th, right? So there is no relation between them. So the point is, if you are not planning well in class 10th, then you will struggle in class 11th and you will get confused in class 12th, which will result you into a bad situation where you would not like to be. Sanket, is the statement correct? Yeah, it's 100% correct. Because if you don't have a clear idea at like at say Around that time. say at the middle of 10th or something around end of the 10th standard, you won't be able to focus on 11th. And Yeah. if you miss your focus in 11th, then you will be overburdening yourself in the 12th class. And most of the questions will be coming from 11th standard too. So preparing for, beforehand, I would say from the end of 10th, Yeah. because most of the classes, most of the preparation starts from April itself, like 10-15 days after your board's completion. So you must have your clear idea before finishing 10th what you have to do in your life if you want to do JE or if you want to do NEET. करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन काफ़ी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स में तो नहीं, पर हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग में लेना है या मेडिकल में लेना है। उसके चलते वो लोग क्या करते हैं कि 11th में वो क्योंकि क्लैरिटी तब तक आती नहीं है। 10th में Yeah. वो इस बारे में सोचते नहीं है। 11th में जस्ट बिकॉज़ दे आर कन्फ्यूज्ड एंड दे आर एलिजिबल, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब ले लेते हैं। पीसीएम भी पूरा ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वी स्टिल हैव टाइम इन 11th और 12th में जाके हम, क्योंकि उसके बाद दे आर एलिजिबल फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। डू यू थिंक द सिचुएशन इज वाइज एनफ और ये Uh, गिव एन एक्स्ट्रा प्रेशर? Physics and chemistry are the compulsory subjects for both medical and engineering. But by taking both biology and mathematics at the same time, you're like overburdening yourself because both the subjects are vast subjects. Even if a person sits and studies mathematics alone, he cannot complete the full syllabus in one go. So I won't recommend doing it both. You can get a better idea what you want to do in your life and then move accordingly with PCM or PCB. So I think it's wiser कि आप 10th class में during your Yeah. 10th grade whenever you are, you should have a good discussion with your parents. Just think about it, which specialization you want to get into. 10th is sufficient enough. After that, I think you should put your heart and soul just in order to achieve your ultimate goal. Because Yeah. 11th and 12th, I don't think that it's the time where you should be doing brainstorming that what I have to do. By Yes. that time, you should be in the way of your preparation, right? Yeah. Okay, True. correct. So, Sanket, coming back to the VIT,
वीआईटी में काउंसलिंग प्रोसीजर वगैरह क्या होता है? बेसिकली कट ऑफ के बारे में आपने हमें थोड़ा एक्सप्लेन किया। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड अ बेसिक आइडिया अबाउट सीट्स कि सीट्स वगैरह कितना होता है। कंप्यूटर साइंस जैसा आपने बताया इज ऑब्वियसली इज prominent and everybody would like to go for that. तो टोटल नंबर ऑफ सीट किस तरीके से होता है? काउंसलिंग जो प्रोसीजर है वो वीआईटी ट्रिपल खुद ऑर्गेनाइज करता है या इट्स अ सेंट्रल बॉडी? सो जो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर होगा वीआईटी में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वीआई ट्रिपल रजिस्ट्रेशन, everything will be done by VIT itself. So ओके, after your ranks are released, you will be divided into phases of counseling. They are nothing but just like our normal JE mains or राउंड्स, JE advanced counseling. You will ओके, be called into batches, like let's say 1 to 20,000 ranks will be called first. Then they will be given the chance to choose all the branches or campuses they want to choose, and ओके, according to the rank or merit they will be getting the desired branch. And in similar way there will be 5 phases of counseling, let's say 1 to 20k, 20 to 40k, 40 to 60k. Then we have 60 to 1 lakh, 1 lakh to 150k. ओके। सो ये राउंड्स होंगे और इन राउंड्स Yeah. में दे विल बी कॉल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिक्योर्ड मार्क्स एंड पोजीशन। They will be given assigned. They will be assigned a college and specialization, Yeah. whichever is available at that point in time, considering Yeah. the options that you gave them. Yeah. Considering the options that you give. Your preferences, considering Yeah. your preferences, whichever is available, they'll give it to you. Yeah. ओके, करेक्ट। तो संकेत आपने काफी डिटेल्स इस बारे में बताई। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स किसी के भी माइंड में ये होता है कि यार आफ्टर गोइंग टू वीआईटी अच्छा है, ठीक है, 4 साल हमारे इजीली अच्छे से निकलेंगे, विल डू हार्ड वर्क, बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स लेटर? आई एम श्योर कि रैंक 9th अगर एनआईआरएफ रैंकिंग वीआईटी की है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि फुटफॉल कम होता होगा कॉर्पोरेट। Uh, so the placements are pretty good. There are a lot of companies coming in. There are super dream offers, dream offers, and as there will be व्हाट आर normal दीज? offers too. Huh? व्हाट आर दीज? So they are the placements are divided into different categories. For example, normal offers will be around uh, 10 lakhs. Then you have 10 to 25 lakhs. Then you have more than 25 lakhs. So these are the categories in which the offers or the companies are distributed. Okay. So you get to go and sit into wide variety of companies, and depending on what performance you give in the interview, you will be Okay. getting the best output according to your input. Okay. So as of now in 2022, highest package till now, the placement procedure hasn't come to an end yet, but the highest package as of now what I am aware of is 75 lpa. Okay. That's great. That's good enough. So, Sanket, इस सिनेरियो में, for example, मतलब I just from my understanding, because I also learn getting information and then updating myself. I just wanted to understand कि VIT में मान लीजिए एक आप स्टूडेंट हो, एक मैं हूँ और एक कोई और भी स्टूडेंट है, तो जो प्लेसमेंट्स है, प्लेसमेंट में क्या हम सब लोग एलिजिबल हैं टू सेट, और वी कैन सेट फॉर अ स्पेसिफिक कॉलेज इफ वी हैव अ स्पेसिफिक सीजीपीए और स्पेसिफिक Yeah. मार्क्स, उस बेसिस पे कुछ होता है या open to that? Yes, you will be eligible for placements according to a company's requirements. So there are different companies which come with different requirements. So basic requirements can be 8.5 CGPA, 8 CGPA, and some companies do have a requirement that the student must not have any standing arrears, which Okay. means he shouldn't have any backlogs. Yeah. And if you come to more high end companies, they may ask you if you have any backlogs in In the the past. past which you Okay. have cleared, but you won't be eligible for sitting it because you had a backlog in the past. Okay. So that will also be considered, that what you Yeah. had in the past will have an impact. So that means, if I have to reiterate again, कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी था, सेकेंड सेमेस्टर भी है और थर्ड है, और अगर आप अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि टू हैव टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो स्पॉटलेस होना चाहिए। दिस इज Yeah. व्हाट।
they will last for, right? या अभी Yeah. इनको एकदम studious student चाहिए, the brightest one. Not the studious ones, but I would definitely say that you should be able to clear all the subjects. It's pretty much like if you put in a little effort, you can easily cover all the subjects in one go. Yeah. Yeah. Okay. So इसमें there is no reservation from the college point of view. There is a reservation from a company's point of view. Companies will say कि भाई हमें इतने CGP से इतने CGP वाले बच्चों Yeah. से ही interview करना है, right? So there Yeah. is no role that the college is playing in between. Huh? There is no role that the college is playing in between. College Uh, बार नहीं करते हैं students को appear होने से. College yeah. open from a college point of view, it's open for all. For college, the CGPA requirement is really less. Okay. It's around 6-7, but depending Okay. on the companies, the CGPA may vary according to the competition, because there will be a lot of people eligible for the specific company, but the intake in that company will be different for each Yes. company. Yeah. So for making the process a lot more easier and smoother, they will keep such restrictions, so they get the best out of all the students. Okay, and how difficult it is to get 9 CGPA, let's say? So it's not that That's it. difficult, but if you study from day one, and if you are dedicated enough, then you can get an 9 GPA. So that's like a theoretical question, but I thought that maybe I should just ask, like, if it's really easy. Anyway, okay, so that's a good Sanket. I just wanted to know one more thing, Sanket. Just for example, if I'm in grade 12 as of now, okay, मुझे VIT में admission अभी लेना है. तो when is that the brochure will come out, and when is the deadline that I have to fill the form, and when is the exam? So the brochure will be coming on the website around December, January, and you have a lot of time to fill the application form. The application forms will be there till March end, or under some circumstances they may even get postponed, and Okay. they may be open till April, mid-April or April end. So you can keep an eye on the website, Yes. and you will get a better idea about the every admission procedure. I don't think so. The application fee is too much. The application fee won't be too much. It will be around 1,000 rupees to 1,300 rupees, pretty much similar to what we pay in JE mains. More or less same. Yeah, more or less. Fine, Sanket. So I think we just got a little idea, a little insight Yeah. from you being there in VIT itself. I think this is legitimate information. Obviously, those who are watching the video can possibly, if you have, I'm pretty much sure that you have many other doubts which we did not cover. So you can share your question with me and Sanket here in the comment section below, and we'll try to answer most of them. Just in case if the comment goes beyond 50, then I think it's worth doing a live session where Yeah. we can have a one-on-one question and we can answer it. So thanks for sparing some time, Sanket, for the students. I'm sure that they'll be thankful to you for speaking with us today. Thank you, Sanket. If we have need again, then possibly we will coming back to you with those questions. Okay. Yes, thank you for having me here, and I would really like to come back over. Thank you so much. Thank you, Sanket, and best of luck.